that's a Ready? crime. And people find this introduction bit great. That's why वो मुझे प्यार से कहते हैं मोटी हो गई हो. And I call it self-growth, dude. I know. They had an option to call me more cuter than that, but they decided to say moti. And that's totally fine. Because today, it's not about how I look, but it's about how we all look at certain circumstances happening in our lives. How we are just holding stuff that deserve to be followed. How we are so attached to the people who deserve to be attached. It's all about moving on. ये लफ्ज़ आपने ज़िंदगी में बहुत सुना होगा, move on कर लो. Actually, at this age of 21, I have partitioned moving on into two categories, you can say. One are the unintentional memories we are walking along. Others are the intentional memories that we are keeping. Actually, it's about 2010, when I was 7 years old. We used to live in kind of a villa, and I was the younger child of my family. तो मेरी अम्मी जान अक्सर तौर पर मुझे घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया करती. And that was just a normal routine. Likewise, एक दिन my mother asked me to buy a milk. 2010 की बात है तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग की बहुत प्रॉब्लम. 8 बज रहे थे रात के. I went outside to buy milk. I brought a milk. और उस वक्त उस शॉपकीपर ने मुझे 2 रुपए वापस दिए. That coin I still remember. And I decided, why not to buy a candy of these rupees? I stepped out into the shop जहाँ पे candies मिलती. There was a boy sitting out there. Might be of 26 or 28. I asked him for the candy. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर तौर पे मिरर के बॉक्सेस लगे रहते हैं जिनमें कैंडीज पड़ी. I asked him for the candy. He replied, बेटा आप ले लो. And when I turned around to have a candy from that, he grabbed me so tightly from the back. A tight grab that a 6-year-old girl can't get out of. He was eating pan that day, and today standing on this stage, I can still feel that pan around my face and my neck. So I was struggling to get out of that grab. I pulled out the mirror that was in front of me. It cracked. बहुत आवाज आई उससे. His intention got there and started running towards me. जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो उनकी स्टेटमेंट थी, अरे नुकसान कर दिया मेरा. Oh wow. Everyone is concerned about their नुकसान. What about he was doing to me? उस नुकसान का किसी ने नहीं सोचा. You might be thinking, क्या ये है मेरा move on? Like I am still talking about things happened in 2010. वो 6 साल बच्ची को नहीं समझ आ रही थी उसके साथ क्या हो रहा था. लेकिन आज यहाँ 21 साल लड़की को अच्छे से पता है कि उसके साथ उस वक्त क्या हो रहा. And today, I can say loudly and proudly that moving on is not name of forgetting. Moving on भूलने का नाम है ही नहीं. Moving on नाम है freeing yourself. खुद को आजाद कर दे. And I freed myself. And today, that's why I'm talking about it. Others are actually, as I mentioned before, the intentional memories we are living with. So हमें पता है, each and every time they are taking pinch of us, एक skeleton रह जाएगा. And still, we are walking along. पता है दुख दे रहा, hurt कर रहा, but still that's okay. हम सब जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ बहुत कुछ हमारी नजरों के सामने डूब चुका है. कुछ डूब रहा है और कुछ किनारे की उस तरफ तुम्हारा मेरा इंतजार कर रहा है. और अफसोस के साथ we are just crying for the things that are gone. Why not to put little efforts towards the thing जो डूब रहे थे? और most importantly, why not to swim towards the thing जो किनारे की उस तरफ मेरा इंतजार कर रही है? हम क्यों नहीं कर रहे? Actually, आप रोते रह जाओगे और वो इंतजार कर करके चला जाएगा. अमजद इस्लाम अमजद से वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई. वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई. दिले
बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। नहीं भूला जाता है इंसान। Actually, what is holding back? To not lift the burden. Imagine, यहाँ बैठा हर शख्स से imagine करे कि आपके हाथ में एक bucket है, full of stones, heavy stones. ऐसी bucket जो आपसे उठाई भी नहीं जा रही। वो stones हैं आपकी रंजिशें, वो टूटे हुए ख्वाब, वो ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो सकी, वो रिश्ते जो टूटे, वो सब। You carrying it? It's heavy, but still you are carrying it and you're walking. और वो देखते अपने आगे एक खूबसूरत सवारी है, जिसकी कलरफुल फ्लावर्स, blooming with tremendous. अब आपके पास क्या चीज़ है जिससे आप उसमें कर सकते हैं? That's another one. लेकिन वो तो खाली नहीं है ना? Do not feel embarrassed to refill your bucket. Good. Now उस bucket को खाली कर दो and keep every flower I want in my life. Do not wait for people. कि वो आएंगे, वो आपकी bucket खाली करेंगे, जनाब सामान आप लाएंगे, yes, I know people. I'm here for you. मैं आपकी bucket खाली करके देता हूँ. This is not going to happen. लोग नहीं समझेंगे. जो गुजरे थे हम पर सारे, खुद पे गुजरे तो लोग समझे, अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, अब ये मौसम जब उन पे खरीदने उतरे तो लोग समझे, इस कच्ची उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली वो टूट निकले तो लोग। What are you waiting for people to help you? Just read your bucket and love yourself. One of the famous TEDx speakers, Adam Rose, said, love yourself the way you love someone else. Oh my God! खुद से वैसे मोहब्बत कीजिए जनाब जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। How we have to love? क्या आपको तुम्हारी friends को नहीं भूलते? क्या आपको भूलते हैं इनको बोलते? How you just came the green flag she's having, ignoring all the red flags. ये हम अपने साथ क्यों नहीं कर सकते? You know what? It's an environment. If you'll buy this car, that will make you look cool. I travel on rickshaw, and it's still I'm cool, bro. If you'll buy this fearless cream, everyone will look at me. I have been at my home, and I'm in a fool myself. Actually, things that we're holding sometimes, they are taking every pinch of us. And at last, I would like to say, I have given mirrors to everyone, right here. Mirrors दिए गए हैं आप लोगों को, किसी के पास mirrors नहीं है. Can you open your mobile phone? Front camera on करिए. Video on कीजिए. Be quick everyone. Yes. आज हम साथ में move on करेंगे. Everyone, are you ready? Front camera खोलना है, video on करनी है. Guys, have a mirror. उसको अपने सामने रख लीजिए. And let me do it for myself as well. And repeat towards me. When I'm taking my name, you have to take yours. Okay, people? Ready? Yes. Me, Afifa Nazir, would always choose peace over anything. I love the way I am. I am exactly one that I should be.